बाद ये लाइट हो गई है, इसका ड्राइव खराब हो गया। मैं रोज सोचता हूँ आज मैं पीडी लेकर जाऊंगा, पीडी नहीं लाता। बातें इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस चल रही, बस 28 ये भी अटेंड करनी है।
एक मिनट, नहीं करती। हाँ हाँ, जो हमारा हमारा है उनकी तरफ से हुई है। हाँ, तो ले लेंगे। Recording in progress.
नहीं देना ना बुकिंग में देना ये
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, म्यूट किया हुआ, अनम्यूट करिए। हेलो नहीं वो सर ये वाला लैपटॉप हियर ठीक है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द सेकंड डे ऑफ दिस इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन वैदिक मैथमेटिक्स। In the session, I feel great pleasure to introduce Sri Vedveer Aryaji. Vedveer Aryaji is a 1997 batch officer of Indian Defence Account Services and senior officer from the Ministry of Defence, and presently working as additional finance advisor and joint secretary in the Department of Defence R&D, Ministry of Defence Finance, New Delhi. He is a chronologist, historian, and Sanskrit scholar. His deep interests in epigraphic studies propelled him to become a methodological researcher with profound insights in the chronological history of ancient India. He made an in-depth study of various ancient Indian epigraphs in original and critique the chronology of India put forth by colonial historians and their followers. He has worked on the scientific contributions of India. He is the author of 5 books related to the Indian contribution to mathematics and astronomy, The Chronology of Ancient India, Victim of Conquest and the Distortions, The Chronology of India from Manu to Mahabharat, and The Chronology of India from Mahabharat to Medieval Era in 2 volumes, and The Origin of Krishna Era, Fact of Fiction, 2020. Mr. Arya is a well-known mathematician which has a vast knowledge about the Indian contributions to mathematics. I welcome you, sir, for your all the participants will be benefited from your vast knowledge and vast experience. I welcome you, sir. Now we will we will play a documentary of Dr. Vedveer Arya sir. It is based on Indian chronology system, and you will just getting this video. कालो व कारणम राज्ञं राजा व काल कारणम इति ते संशयो मुंभूत राजा कालस्य कारणम. The origin of ancient Indian astronomy is closely linked with the growth of agrarian society of the early Vedic period. The Vedas indicate the knowledge of lunisolar calendar, intercalary month, and the division of the zodiac into 28 nakshatras. Later, it was Mayasura's Surya Siddhanta which had revolutionized Indian astronomy by introducing astronomical calculations based on spherical trigonometry and ushered in a new era of Siddhantic astronomy. According to Surya Siddhanta, Mayasura observed a rare conjunction of the sun, moon and all planets except their nodes and apsides were in conjunction in Aries, Mesha on new moon day of Chaitra month at the end of the 28th Krita Yoga. Software simulations using the JPL Horizons ephemeris system established that such conjunction on Chaitra Shukla Pratipada
occurred only once in the last 16,000 years. That is, on 22nd February 6778 BCE. Evidently, Mayasura had personally observed this conjunction in 6778 BCE and referred to this conjunction as an epoch for his Surya Siddhanta. In the 57th verse of chapter 1, Mishado means that sun was in the first degree of Aries, and Madhyagataha means sun was in the middle of this conjunction of planets. The simulation shows that Venus, Saturn and Moon were located east of the sun, whereas Mercury, Mars and Jupiter were located west of the sun. The sun was in the first degree of Aries and in the middle of this 26-degree conjunction of all planets. The conjunction perfectly matches with the description given in the Surya Siddhanta. This rare conjunction occurred only once in the last 16,000 years. This establishes that Mayasura wrote Surya Siddhanta in 6778 BCE, and the calendar of Surya Siddhanta completes 8,800 years in the year 2022. Prior to 6777 BCE, a Yuga calendar of 5 years and a Chatur Yuga calendar of 20 years were in vogue. Ancient Indian astronomers revised the time span of a Chatur Yuga from 20 years to 4800 years and established a Yuga cycle of 1200 years. Subsequently, the Chatur Yuga cycle was enlarged from 4800 years to 12,000 years with a differential duration of yugas. Before Mahabharata era, the time span of a yuga increased from 1200 years to 4,32,000 years, and that of a Chatur Yuga cycle increased from 12,000 years to 43,20,000 years, with an objective to facilitate accurate calendric and astronomical calculations in whole numbers. It is pertinent to understand the evolutional history of the scheme of nakshatras in Indian astronomy. During the Vedic era, the scheme of 28 nakshatras starting from Mrigashira 11,200 BCE. At that time, winter solstice occurred at Mrigashira. When winter solstice shifted to Rohini in 10,200 BCE and Krittika in 9,200 BCE, due to precession of equinoxes, the order of nakshatras was also updated. The list of nakshatras starting from Krittika in Atharva Veda, which indicates that the Nakshatra Sukta was written when winter solstice had shifted to Krittika. When winter solstice again shifted to Ashwini around 7,322 BCE, Abhijit was finally excluded, and the list of 27 nakshatras was formally introduced starting from Ashwini. This major change in the scheme of nakshatras has been considered as the beginning of the 7th Manvantara. Thus, the first Krita Yuga of the 7th Manvantara commenced in 7322 BCE. Bhagavad Puran and Mahabharata's Vanaparva mention that when the first Krita Yuga commenced, a conjunction of Sun, Moon and Jupiter took place in Pushya Nakshatra on the day of vernal equinox and new moon, that is 24th May 7321 BCE. Using computer simulation of nakshatra latitudinal data by varying ecliptic obliquity, ecliptic node location and ecliptic sync together with proper motion, Sri Anil Narayanan demonstrated that a match for the Surya Siddhanta latitudinal data was obtained in the time frame 7300 BCE. Therefore, Mayasura was the real father of trigonometry who lived much prior to Greek astronomer Hipparchus. Mayasura's Surya Siddhanta was the first stream of knowledge which formulated the concept of 7-day week starting from the epochal day of Surya Siddhanta, that is
22nd February 6778 BCE, Sunday. This tradition of 7-day week was adopted by the entire world subsequently. This fact indicates that a reform in the modern Gregorian calendar is required, since the epochal day of Surya Siddhanta, 22nd February 6778 BCE, and the epochal day of the Shakanta era, that is 1st April 78 CE, have been erroneously calculated as Wednesdays in the Julian calendar. It would also be logical to replace the concept of Julian day with the Surya Siddhanta day, considering the day 0 of year 0, start Babylonians were the first to introduce the Sabbath, that is Saturday, as holiday, and the Hebrew calendar of Jews adopted it from them is not founded on facts. It was the ancient Indians who introduced the concept of 7-day week to the world. All cycles of 60 years or 12 years in the world follow the epoch of the Surya Siddhanta cycle of 60 years, that is 6777 BCE. Abul Fazl mentions that an ancient Turkish era calendar, also known as Eghuri, was based on a 12-year cycle. Ancient China also used the 60-year cycle, and the first year of the current Chinese cycle was 1984 CE. The Chinese cycle of 60 years and the Turkish cycle of 12 years are based on the Indian epoch of 6777 BCE. Under influence of Surya Siddhanta, Brahma Siddhanta introduced the cycles of 12 years and 60 years starting from 6773 BCE. Thus, 6773 BCE was the first year in Brahma Siddhanta's 60-year cycle, whereas 6777 BCE was the first year in Surya Siddhanta's 60-year cycle. Presently, we are following the Brahma Siddhanta's 60-year cycle, and 1987 was the first year. Tibetans also followed the 60-year cycle of Brahma Siddhanta. Abul Fazl refers to an astrological era of creation that reckoned when all planets were in conjunction in Aries. The Arab astronomer Abu Mashar, in his book Kitab al-Kiranat, says that the world was created when the sun, moon, and all the 5 planets gathered at the first degree of Aries. He proposed cycles of events choosing the Yuga cycle of 1,80,000 years, similar to Mayasura's Surya Siddhanta. Al-Biruni states that Abu Mashar derived his conclusions from Indian sources. Abul Fazl mentions that 1,84,696 years have elapsed starting from the epoch of astrological era of creation. Persian astronomers might have counted roughly 3,000 years from the epoch of the conjunction in Aries to the epoch of deluge in 3708 BCE. According to Varaha Mihra, a yuga of Mayasura's Surya Siddhanta had a duration of 1,80,000 years. It appears that astronomers multiplied 3,000 years by 60 and assumed that 1,80,000 astronomical years had elapsed by the time of deluge in 3708 BCE. If 3,000 civil years are added to the epoch of the deluge, the Persian epoch of the conjunction in Aries is exactly the conjunction of 6778 BCE recorded in Surya Siddhanta. Thema Mundi. The earliest horoscope in Greek tradition was prepared during the 7th millennium BCE, and it has Cancer in the ascendant, which indicates the vernal equinox at Cancer. Greek scholars Plato and Cicero also mentioned that the great year began at the conjunction of the sun, moon,
and all planets. It indicates that Greek astrology was also influenced by Mayasura's Surya Siddhanta. Accordingly, the epoch of Surya Siddhanta, that is 6778 BCE, became an astrological epoch of the creation of the world in Persian and Greek astrology. Mithraism of West evolved when the Surya Siddhanta was theologically transformed into the worshipping of Mithra, the sun god. Winter solstice became the birthday of Mithra because the new year in the Surya Siddhanta used to commence at winter solstice in the 7th millennium BCE. Certain astronomical observations recorded in post-Surya Siddhanta literature can also be scientifically dated. The historical events of Ramayana occurred around 5677 to 5577 BCE in the last century of the Treta Yuga. Yuddha Kanda of Ramayana indicates the position of a comet in Mula Nakshatra when the Vanara Sena was ready to march towards Lanka. Ramayana describes that a comet touched the root of Mula Nakshatra, which was oppressed by a planet almost at the same time. Venus was in the Mula constellation around 22nd August to 3rd September 5635 BCE, and the Halley's comet had also entered Mula Nakshatra on 23rd August 5635 BCE. Thereafter, it gradually faded away. Since Ravana was born in Mula Nakshatra, the appearance of Halley's comet in Mula Nakshatra in 5635 BCE has been assumed as an astrological indication of the destruction of Rakshasas. This way, the date of Rama-Ravana Yuddha can be absolutely fixed in 5635 BCE. The Dwapara Yuga of 2400 years commenced in 5577 BCE and ended in 3176 BCE, and the Mahabharata war took place in 3162 BCE. The available text of Surya Siddhanta was written by Latadeva in 3101 BCE based on Mayasura's Surya Siddhanta of 6778 BCE. Varaha Mihira's Pancha Siddhantika gives a summary of Mayasura's Surya Siddhanta. The main difference between these two Siddhantas is that Mayasura referred to a yuga of 1,80,000 years of Asura tradition, whereas Latadeva referred to a yuga of 4,32,000 years of Deva tradition. Interestingly, Latadeva observed a rough conjunction of all planets on Chaitra Shukla Pratipada, that is 18th February 3101 BCE, and compiled the text of Surya Siddhanta. The Surya Siddhanta indicates that the value of the Earth's obliquity to be 24 degrees. The obliquity of Earth's axis was 24 degrees prior to 2900 BCE. Presently, the obliquity is around 23.4 degrees. Surya Siddhanta measured the latitude of Ujjain to be 24 degrees and established the latitude of Ujjain as prime meridian in 6778 BCE. Because Ujjain is geographically located at the point where the zero meridian of longitude and the Tropic of Cancer intersect. According to Latadeva, there were two pole stars in 3101 BCE. Thuban is part of Draco constellation and it was the North Pole Star around 3900 to 1800 BCE. Alpha Eridani or Ekarnar was the South Pole Star around 3400 to 2000 BCE. Around 3400 BCE, Ekarnar's declination was 82 degrees 40 minutes, placing it within 7.5 degrees of the South Celestial Pole.
Puranas give the description of the stars of Shishumara, that is, Draco constellation, and refer to the position of the North Pole star in the tail of Draco constellation. It is well known that Vyasa of Mahabharata era compiled Puranas in the 32nd century BCE. Surya, Taitamaha, Vashishtha, Romaka, and Paulisha Siddhantas discussed by Varaha Mihira in the Pancha Siddhantika are Indian Siddhantas. Romaka Siddhanta's yuga of 2850 years comprised 1050 Adhimasas and 16,547 Tithi Pralayas. Western Indologists speculated that 2850 year cycle of Romaka Siddhanta has 10,40,953 days, which implies a year of 365 days, 5 hours, 55 minutes, 22 seconds, similar to the calculations made by Hipparchus and Ptolemy. They also concocted a false theory that the Romaka Siddhanta is based on the tropical system of Greece and Byzantine Rome. Romaka Siddhanta was founded in India much before the evolution of Hellenistic astronomy and the foundation of Rome. It is originally a lunisolar calendar, and the yuga of 2850 years is based on Shatapatha Brahman's Yagyavalkya cycle of 95 years. The speculation of the foreign origin of Romaka Siddhanta is falsely founded. The Metonic cycle of 19 years is undoubtedly derived from the sub-cycle of 95 years of Romaka Siddhanta. Varaha Mihira refers to a commentary on Romaka Siddhanta written by Latadeva around 3101 BCE. Paulisha Siddhanta also evolved before the Mahabharata era because Latadeva wrote a commentary on the Paulisha Siddhanta around 3101 BCE. Paulisha and Surya Siddhantas both give the length of the sidereal year as equal to 365.25875 days. Apparently, Paulisha Siddhanta also followed the lunisolar calendar of Chaitra Shukladi and the Indian cycle of 43,20,000 years. Western scholars said that Paulisha Siddhanta follows Yavana Jataka, but chronologically, Latadeva's commentary on Paulisha Siddhanta is older than Yavana Jataka. Therefore, Paulisha and Romaka Siddhantas existed in India much before the evolution of Hellenistic astronomy. Prior to the commencement of Siddhantic astronomy in 6778 BCE, Vedas and Brahmanas indicate the beginning of Samvatsara in Sharad Ritu. Therefore, the reference of Vishuvat in Vedic literature must be interpreted as the autumnal equinox. The Ashwini hymns of the 7th Mandala, compiled by Vashishtha Maitra Varuni, indicate that the Sharad Ritu calendar of Vedic era had commenced when the autumnal equinox occurred in Ashwini Nakshatra around 13,500 BCE. It has been misinterpreted by many scholars that Vedanga Jyotisha fixes winter solstice at the beginning of Shravishta Nakshatra and summer solstice at the middle of Ashlesha Nakshatra. This misinterpretation leads to a date around 1400 BCE. The second verse of Rig Veda Jyotisha indicates that Shuchi had compiled the Jyotisha of Lagadha Muni. Evidently, Lagadha was not the real author of the available text of Rig Veda Jyotisha. The available Vedanga Jyotisha might have been recompiled around 3500 BCE because it refers to Tapas month of Shishira season as the beginning of New Year. The Mahabharata written in the 32nd century BCE clearly indicates the knowledge of Vedanga Jyotisha. Shuchi's statement, Tad Adi Yugam Syat, tells us that the astronomical references to
to Shravishta and Ashlesha nakshatras are actually related to the Adi Yuga in the past and not observed during his lifetime. In fact, Lagadha Muni might have referred to autumnal equinox at the beginning of Shravishta nakshatra and vernal equinox at the middle of Ashlesha nakshatra, which is dated around 8300 BCE. In Paitamaha Siddhanta of Vedanga Jyotish calendar, a Saptarshi cycle of 2700 years was introduced around 6777 BCE, and first 100 years from 6777 to 6677 BCE were hypothetically assigned to Ashwini Nakshatra. Every sub-cycle of 100 years was linked to one nakshatra in order to easily remember the number of 100-year cycles elapsed. Accordingly, Saptarshis were in Magha Nakshatra around 3177 to 3077 BCE when Mahabharata war took place in 3162 BCE and Yudhishthira ascended the throne. Traditionally, ancient Kashmir followed this Saptarshi calendar. When the Kashmiri astronomers introduced the Chaitra Shukladi calendar in place of Magha Shukladi calendar, they had to reset the epoch of Saptarshi calendar in 3076 BCE, which came to be known as Laukika Samvat. Thus, Indian civilization has a tradition of 6,700 years of pre-Siddhantic astronomy from 13,500 BCE to 6,778 BCE and the tradition of 8,800 years of Siddhantic astronomy from 6,778 BCE to till date. Ancient Indians taught the basics of astronomy, trigonometry, spherical trigonometry and calculus to the world and attained the status of Vishwaguru for thousands of years in the past. Let's reclaim our glorious scientific heritage and inspire our scientists to work together with pride and passion so that the glory of our nation could be reawakened in the world. Let us be proud of being the descendants of the greatest and the oldest continuous civilization which laid the strong scientific foundations in ancient times that perhaps led the world in the direction of modern advanced sciences. इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर लग रहा है कि कुछ आज जो आप भारतीय कालक्रम के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इतना कुछ आंखों को खोलने वाला है। और इस विषय में अगर हम कहें तो डॉक्टर वेदवीर आर्या सर से ज्यादा अच्छा हमें कौन समझा पाएगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में सर का स्वागत करती हूँ और साथ साथ सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर आए और भारतीय कालक्रम के विषय में हमारे साथ में चर्चा करें और सभी को इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बात करो बेटा, जाओ बुआ जी कब आओगे? बुआ जी कुछ चीज कुछ तो आप सभी को इस
वैदिक गणित विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आपने अभी 20 मिनट में जो भी सुना, ये आपको लग रहा होगा कि ये गणित में क्या ज्योतिष पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। हाँ, ऐसा तो नहीं लगा आप लोगों को। भारत में ना कोई भी विज्ञान जिसका भी विकास हुआ है ना, उसका कोई ना कोई एक एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि जिसे अप्लाइड साइंसेस कहते हैं हम लोग, वो अप्लाइड साइंसेस का आपके पास कोई ऐसी थियरी है जिसका कोई आपके जीवन में प्रयोग नहीं आ रहा है, तो उसका आपके पास उस विषय पर आप उतना आपके लिए वैज्ञानिक कोई रुचि आप में नहीं हो सकती। तो वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ से ही विज्ञान का भारत मनुष्य के जीवन में क्या प्रयोग हो सकता है, उन विषयों पर ज्यादा केंद्रित किया। तो गणित का जो प्रयोग था भारत में, दो मुख्य विषयों पे हुआ। एक तो ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, तो एक तरीके से गणित और ज्योतिष शास्त्र साथ साथ विकसित हुए। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा गणित को जो है जिस तरह सारे साइंसेस में शिखर पर रखा गया, जैसे यथा शिखा मयूराणाम एक श्लोक आता है जिसमें मोर के जो सिर पर जो शिखा, उस तरीके से गणित का स्थान सर्वोच्च स्थान दिया गया, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो कि सभी साइंसेस का एक मूल आधार होता है। तो अब एक भारतीय जो परंपरा है, जो कुछ हम लोगों ने विश्व को दिया, आज तक पिछले 200-300 वर्षों में वो विश्व वो रिकॉग्निशन नहीं दे पाया। वो तो विश्व की तो छोड़ दीजिए, हमने स्वयं भी नहीं दिया। इसका कारण क्या है? तो हमारा आपने गणित पढ़ा, तो गणित का इतिहास भी आपने पढ़ा होगा। आपको बताया जाता है कि बेबीलोन और ग्रीक और यूक्लिड का जो ज्योमेट्री है, उसके बाद जब अलेक्जेंडर के आक्रमण के साथ जितने भी कुछ ग्रीस के साथ जो भारत का इंटरेक्शन हुआ, उस समय भारत में ज्ञान विज्ञान का प्रसार और उसमें अनुसंधान उसके बाद हुआ। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि भारत सबसे प्राचीन सभ्यता है विश्व की। तो फिर आपको उसका एक प्राचीनता क्या है, उसका मुख्य आधार चाहिए। तो उसके लिए जो है मैंने जो अनुसंधान किया है, विशेष जो कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, जैसे मैंने एक मयासुर के सूर्य सिद्धांत के बारे में, कोई भी समाज या सभ्यता, उसका जो विकास होता है या उसका जो कालक्रमिक इतिहास लिखा जाता है, तो इतिहास लिखने से पहले आपके पास एक उन्नत कैलेंडर का होना जरूरी है, क्योंकि समय की गिनती करने के लिए आपके पास एक कैलेंडर होना जरूरी होता है कि इतने साल समाप्त हुए। तो हमारे पास वैदिक युग से लेकर एक निरंतर एक उन्नत कैलेंडर का प्रयोग हम करते आ रहे हैं। तो उसको अगर वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान आप करेंगे तो आपको अपना कालक्रम मिल जाएगा। क्योंकि कई बार हजारों वर्षों की जो सभ्यता होती है, बीच बीच में कुछ उत्थान तो आपके पास वो कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी या वो ऐतिहासिक चक्र मिल नहीं पाता, कहीं कहीं गैप्स आ सकते हैं। लेकिन जो सभ्यता का जो निरंतरता है वो आपके कैलेंडर से, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने शक संवत, विक्रम संवत, उससे पहले हम लोग सप्तर्षि कैलेंडर, युधिष्ठिर संवत का प्रयोग करते रहे। उससे पहले हमारे पास युगों का कैलेंडर चलता था। तो वो युगों का कैलेंडर कैसे विकसित हुआ, ये सब समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सूर्य सिद्धांत में जो कंजंक्शन दिया गया, ये मैंने एक टाइमलाइन आपको बताया। भारत में दो मुख्य, एक तो प्री सिद्धांतिक कैलेंडर था, उसके बाद सिद्धांत ज्योतिष। दोनों में अंतर इतना है कि सिद्धांत ज्योतिष से पहले हम 5 वर्ष का एक युग वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर करते थे, और 20 वर्ष का जो चक्र था वो 4 युगों का, वो इसलिए आवश्यक था क्योंकि हर 5 वर्षों में एक गणित शास्त्र पढ़ने वालों को भी भारतीय ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारा कैलेंडर भी बहुत वैज्ञानिक रूप से उसको विकसित किया गया है।
तो हर जो आपके पास 365 दिनों का एक सूर्य सौर वर्ष होता है, लेकिन जो ल्यूनर ईयर है उसमें 354.5 डेज होता है। तो आपके पास 11 दिन के आसपास का एक अंतर होता है दोनों में। दोनों करना है तो आपको 2.5 साल में एक अधिक मास का आपको समावेश करना होता है। उससे आपके पास एक पूरा दोनों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है, सोलर कैलेंडर एंड ल्यूनर कैलेंडर दोनों का। तो इसलिए उसको ल्यूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है। तो 5 वर्षों में अगर 2 महीने करते हैं तो आप 20 वर्षों में 8 महीने करेंगे। लेकिन वो उससे क्या होता है कि एक एरर आता है, 15 दिन एक्स्ट्रा आपके कैलेंडर में आ जाते हैं। तो इसके लिए एक कल्पना या एक जो ये एक 20 वर्ष जैसे ही समाप्त होते हैं तो उस समय एक पूरा मास की जगह आप अर्ध मास का आधा महीना का ही करते हैं। तो उससे आपका आपकी ये जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। तो आपको क्या करना था, 7.5 महीने का आप इंटरकैलेशन कर रहे हो एक 20 वर्ष के चक्र में। तो इस तरीके का ये थोड़ा इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था उस समय। तो फिर ये जो सिद्धांत ज्योतिष के समय सूर्य सिद्धांत ने जो है जो मयासुर ने जब किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें केवल सूर्य की गति चंद्र की गति से ही हमें गणना नहीं करनी है, हमें उसका समन्वय करना है बृहस्पति चक्र के साथ। जुपिटर का जो साइकिल है, जोवियन साइकिल है, वो लगभग 12 वर्ष का है। इस तरीके से सिद्धांत ज्योतिष का प्रारंभ होता है जब से 12 वर्षों का जो साइकिल का हमारे कैलेंडर के साथ समावेश किया गया। और वहीं से ही हमारे जितने भी कुंभ मेला की जो परंपरा है 12 वर्ष वाला चक्र, वहां से प्रारंभ होता। ये अंतर है प्री सिद्धांत ज्योतिष के बीच में। तो ये जो 12 वर्षों का चक्र जब आया तब फिर युगों के समय, अब 5 वर्ष के युग का वो महत्व नहीं रहा, 20 वर्षों का जो चतुर्युग का जो वो उसका महत्व नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम परंपरावादी तो थे, हमने कहा कि नहीं, जो हम वेदों से ऋषियों से जो ला रहे हैं ठीक है, 5 वर्षों का युग रख लेते हैं, लेकिन उसको जो इंटरकैलेशन है हम बृहस्पति चक्र से करते हैं। लेकिन बृहस्पति चक्र से आपको इंटरकैलेशन करना है तो आपका जो 5, 10, 20 वर्षों का बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक साल में एग्जैक्टली 365 डेज 365 डेज नहीं होते, 365.25 वो भी एग्जैक्टली नहीं है, एक लंबा फ्रैक्शन है। जब आप सब गणितज्ञ हैं, जब आप फ्रैक्शंस को डील करते हैं तो आपको क्या चाहिए, नंबर छोटा है तो आपके लिए एक्यूरेसी में नहीं, तो आप बड़ा नंबर लीजिए, फिर फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती। तो यही किया गया कि युग को 1200 वर्षों का युग कर दिया गया, कि एक युग को हम 1200 वर्षों का लेते हैं। तो फिर उससे जो है आपका लगभग 12 बृहस्पति चक्र का एक 100 चक्रों तक 100 साइकिल्स, तो दैट इज 1200 ईयर्स। तो 1200 ईयर्स का जो साइकिल है वो शुरू में लिया गया। फिर पता चला कि एक्यूरेसी और चाहिए उनको, तो उन्होंने 12,000 वर्षों का चक्र लिया। फिर उसको और भी एक्यूरेसी करने के लिए उसको 360 से मल्टीप्लाई किया, तो 43,60,20,000 ईयर्स का एक आपको एक बड़ा चक्र मिल जाता है। उससे आपके कैलेंडर की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। लेकिन हमारा जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है और जो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल है, इन दोनों में बाद में हम समझे कि यही हमारा कालक्रम है। तो इस भ्रम में हम लोगों ने, हमारा जो इतिहास है वो लाखों करोड़ों वर्षों का वो उसमें आ जाता है। तो फिर आधुनिक जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने कहा कि इतना इतिहास कहाँ है, वो असंभव है। बहुत सारे एक सभ्यता का इतने करोड़ों वर्षों तक विकसित और स्थापित रहना भी एक बहुत समस्या है, क्योंकि खंड प्रलय बहुत कुछ होते रहते। तो समस्या वहां पर है। हम भारत के कैलेंडर का जो विकास हो रहा था उसको हमने सही जो ये युगों का साइकिल जो बड़ा करते गए उसकी वजह से, तो इसलिए जो है हमें पहले ये समझना पड़ेगा। ये क्या आपका, हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये जो है ये कंजंक्शन जो है ना, जो सूर्य सिद्धांत में ये कहा गया,
अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। आप लोग जो नक्षत्र है ये कोई ये मत सोचना कोई अंधविश्वास है या कुछ। पूरा जो आप जो रात में जो आकाश देखते हैं वो एक तरह का स्फीयर है, एक आप सर्कल के रूप में देखिए तो पूरा जो चक्र वो 360 डिग्री है। 360 डिग्री में चंद्र एक दिन में जितना 24 घंटे में जितना चलता है वो एक नक्षत्र है। तो इन्होंने क्या 360 को पहले 28 नक्षत्रों में लिया, क्योंकि जब मून को 360 डिग्री जो पृथ्वी के चारों तरफ जो घूम के एक बार वापस आने में उसको लगभग जो समय लगता है वो 27.5 डिग्रीज का वो एक वो ले लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 27.3 है। तो वो हमने इनिशियली मान ले कि चलो फ्रैक्शंस को डील करना मुश्किल होता, क्योंकि एक दिन आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए था। आप ऐसे नहीं चलोगे फ्रैक्शंस में, आप कुछ घंटों का कोई दिन तो होता नहीं, पूरा कैलेंडर में एक पूरा दिन होता है, या उसको कहते हैं आप एक एक्स्ट्रा डे अधिक तिथि कर सकते हो या क्षय तिथि कर सकते हो। कोई क्षय घंटे नहीं हो सकते या अधिक घंटे आप उसके साथ नहीं डील करते, आपको इंटीजर में वैल्यू चाहिए था। तो इसलिए भारतीय जो गणितज्ञों ने बाद में 28 की जगह 27 नक्षत्र लिए, क्योंकि 360 डिग्री को जब आप 27 से डिवाइड करते हैं तो आपको 13.2 डिग्री विदाउट एनी फ्रैक्शन एक आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से जो बृहस्पति चक्र का जो सिद्धांत ज्योतिष के दो मुख्य, एक तो 12 साल का जो चक्र लिया, दूसरा 27 नक्षत्र, पहले 28 नक्षत्र होते थे। ये दो अंतर है दोनों में, प्री सिद्धांतिक एंड सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी। ये जो कंजंक्शन है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पिछले 16-18 हजार वर्षों में एक ही बार हुआ, मैं उससे पीछे इसकी गणना नहीं की, क्योंकि हिमयुग में जाके आप किसी सभ्यता के होने का या वो संभव नहीं होता, क्योंकि हिमयुग क्या होता है, शीत ऋतु, अधिक शीत ऋतु या बहुत ही अत्यंत शीत युग ही होता है, मतलब कोई सीजन एक ही है आपके पास। तो आपके पास तो कोई वर्षा का संभावना ही नहीं उस समय, तो एक ही सीजन वाला समय में एक सभ्यता का विकास होना संभव है। कृषि आधारित समाज के लिए वर्षाओं का एक वर्षा जो 5 या 6 ऋतुओं का जो चक्र है उसका होना अनिवार्य होता है। उसी के आधार पर मानव सभ्यता विकसित होती है। तो हिमयुग की स्थिति में हमें किसी सभ्यता के होने के, इसलिए मैंने उस तक नहीं गया। 17-18 हजार वर्षों में केवल यही आता है, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे 360 डिग्री, क्योंकि कंजंक्शन जो है सूर्य का मेष राशि के 0 डिग्री में होना, ठीक है, हर साल में एक बार होता है, हर साल में सूर्य मेष राशि के उसमें आता है, लेकिन 5 ग्रहों का एक साथ आता है, माने कि एक राशि में 30 डिग्री के अंदर ही जो सारे ग्रह आते हैं तो फिर उसे कंजंक्शन माना जाता है। ऐसे तो कहीं ना कहीं तो सारे ग्रह है ही, तो कंजंक्शन वो मिलता है कि सबसे पास में आना वो 30 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, एक राशि का वो होता है, तो तब उसे कंजंक्शन माना जाता है। ये संभावना होती है 400 वर्षों में एक बार, सारे ग्रहों का, सूर्य चंद्रमा सातों का एक साथ विदिन 30 डिग्रीज में होने के लिए एक रफली 400 वर्षों का एक समय लगता है। तो आप अगर 20,000 वर्ष भी लेंगे, आपके कितने होंगे, 50-60 इस तरह के कंजंक्शन हो सकते हैं। 50-60 में भी केवल एक विशेष तिथि पर अमावास्या को ही होना, और उस समय भी सूर्य का मेष राशि में होना, ये लगभग 1 लाख से भी ज्यादा वर्षों में एक संभावना आती है, प्रोबेबिलिटी आप वैसे देखेंगे। तो उसके आधार पर आप इसको गणना करेंगे तो केवल एक ही आता है, और ये बैक कैलकुलेशन नहीं हो सकता। अगर बैक कैलकुलेट करने का आप समझते कि उस समय भारतीयों ने बैक कैलकुलेट करके कुछ इस तरह का कंजंक्शन इमेजिन किया, नहीं है, ये एक व्यक्ति ने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जो भी भारतीय ज्योतिष शास्त्री था। इसका बैक कैलकुलेशन संभव नहीं, बैक कैलकुलेशन है तो उनको ये मानना पड़ेगा कि आधुनिक ये कंप्यूटर्स थे, और जो JPL होराइजन, जो मैं जिस यूफेम सिस्टम की बात कर रहा हूं, अभी नासा ने
2008 लास्ट 10-20 ईयर्स में वो विकसित हुआ। एक डेल्टा टी करेक्शन होता है। ये जो डेल्टा टी करेक्शन की जरूरत क्या होती है, क्योंकि सूर्य, चंद्र और सारे ग्रहों में जो आकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो करेक्शंस चाहिए, वो उसका भी ज्ञान था क्या उस समय? ये कल्पना करना ये असंभव है, क्योंकि वो आधुनिक समय में ही उस ज्ञान का विकास हुआ है। इसीलिए ये केवल एक ही डेट संभव है सूर्य सिद्धांत में जिस कंजंक्शन की बात, क्योंकि इसी को उन्होंने इपोक मान करके अपने सिद्धांत की रचना की मयासुर ने। तो उन्होंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है आज से एग्जैक्टली 8800 वर्ष। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई क्योंकि 2022 में एग्जैक्टली 8800 ईयर्स कंप्लीट होते हैं और 8801 ईयर्स प्रारंभ होता है। और जिस दिन से उन्होंने प्रारंभ किया उस दिन को उन्होंने रविवार से प्रारंभ किया। इस तरीके से जो वीक डे है विश्व को भारत ने दिया। आज तक विश्व को पता नहीं किसने ये वीक डे दिया। वो कहते हो सकता बेबीलोन से हुआ होगा वो भी, लेकिन वो शनिवार से सबात जो ज्यूइश कैलेंडर है, बेबीलोन कैलेंडर है, शनिवार को वो वहां से प्रारंभ करते। तो रविवार को जो वेस्टर्न ट्रेडिशन में रविवार को क्यों अवकाश या जो उनका रहा है वो इसी असुर परंपरा में जो सूर्य सिद्धांत है रविवार से ही उनका कैलेंडर प्रारंभ हुआ था मयासुर के समय में। दूसरा, यही सूर्य सिद्धांत बाद में सूर्योपासना में आया। उसलिए जो मिथ्राइज्म था क्रिश्चियनिटी से पहले, तो मिथ्रा, और उस समय जिस समय ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था उस समय विंटर सोल्स्टाइस हो रहा था। तो इस तरीके से सूर्य का जन्म तिथि भी जो है विंटर सोल्स्टाइस मान लिया गया और उसको भी एक तरीके से इपोक ऑफ एस्ट्रोलॉजी या इपोक ऑफ क्रिएशन भी माना गया वेस्टर्न ट्रेडिशंस में। इस तरीके से भारत का सूर्य सिद्धांत वेस्ट की तरफ गया। ये नहीं कि वेस्ट से हमारे पास ये सिद्धांत है। इसी की वजह से ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, पर्शियन एस्ट्रोनॉमी, ये सब सूर्य सिद्धांत के आधार पर इसलिए है क्योंकि वो भारतीय सिद्धांत के मान करके ही उन्होंने अपना कैलेंडर और अपनी एस्ट्रोलॉजी उन्होंने विकसित की उसके आधार पर। तो ये है हमारा इतिहास और कैलेंडर। तो अब आप देख लीजिए, अब मैं कह रहा हूं कि सूर्य सिद्धांत की रचना आज से 8800 साल पहले हुई है। तो वो जो मयासुर है, ही वॉज प्रैक्टिसिंग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप किसको पढ़ाते हैं आजकल? हिपरकस, ग्रीक, 100 बीसी या वो उनका डेट है। तो यही हो जाता है जब आप कालक्रम के दादी पोती हो जाती, पोती दादी हो जाती, आप पूरा इतिहास ही गड़बड़ हो जाता है। तो ये अंतर है। क्यों कालक्रम की आवश्यकता है कि भारत ने विश्व को क्या दिया? ये हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत प्राचीन काल में विकसित हुआ। तो आज से 8800 साल पहले हम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वैदिक युग तक जाते हम एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का विकास कर चुके थे। जब एक नक्षत्रों का जो डिवीजन है वो एक प्रकार का एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये है एक। उसके बाद मैं इसको स्किप करता हूं। ये उसके बाद क्या हो कि अभी जो अवेलेबल है सूर्य सिद्धांत वो लाटदेव ने लिखा, मयासुर का भी उपलब्ध नहीं है। हमें केवल पंच सिद्धांतिका जो वराहमिहिर की जो लिखी हुई ग्रंथ है उसी में उसका उल्लेख आता है। वो एक सार उन्होंने प्रस्तुत किया और लाटदेव ने वो इसलिए उन्होंने किया, उनको सूर्य सिद्धांत सबसे एक्यूरेट लगा कि इसको इसलिए उनका था कि कलयुग का भी प्रारंभ कोई ना कोई, हर युग का प्रारंभ एक कंजंक्शन से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 3101 ईयर को एक इपोक मान करके सूर्य सिद्धांत का एक तरह का रिकम्पाइलेशन किया। ये है एक तरीके से कैसे युगों का और टाइमलाइन का विकास कैसे हुआ। वैदिक युग में 5 वर्ष का ही युग था और 20 वर्ष का चतुर्युग था। वो धीरे धीरे युग का जो मान है वो परिवर्तित होता गया क्योंकि हम एक्यूरेसी चाहते थे कैलेंड्रिकल कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन ऐतिहासिक कालक्रम और जो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल है
दोनों के अंतर को हमें समझना चाहिए, उससे जो है हमारा एक प्रामाणिक जो कालक्रम है वो उभर कर आता है। तो इसका मैंने शीट जो सूर्य सिद्धांत में जो कंजंक्शन की बात की, उसका जो एग्जैक्ट डेट 22 फरवरी 6778 बीसी है, वो जो है एक शीट एंकर हो जाता है हमारे कालक्रम के लिए। तो ये सब है, ये समय की वो इस तरीके से हमारा जो कालक्रम आता है लगभग 14,500 बीसी से लेके, उससे पहले प्रोटो वैदिक पीरियड था, 14,000 लगभग 16,500 वर्षों का हमारा इतिहास है। रामायण का समय आज से 7,700 वर्ष पहले, सूर्य सिद्धांत उससे 1200 वर्ष पहले, फिर उससे पहले उत्तर वैदिक और उससे पहले वैदिक युग। अब हम गणित में आते हैं, तो आप सबने कि डेसिमल सिस्टम और जीरो ये सबका विकास हुआ है भारत में ही। वेदों में जो है लगभग 10 to the power 12 तक का जो नंबर है उसका प्रयोग मिलता है। आपने एक मंत्र सुना होगा, एका चमे द्वे चमे, उसी अध्याय में। तो अब यजुर्वेद में जो मंत्र है, तो यजुर्वेद का समय आता है लगभग 11,500 से लेकर 10,500 तक। तो जो वो डेसिमल सिस्टम पर ही आधारित था, तो एक कोई ना कोई बेसिक जीरो का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम का विकास वैदिक युग में ही हो गया था। ये नहीं है कि कोई आर्यभट्ट ने जीरो भी दिया, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के जो घूमने के जो साइकिल है उसका भी एक्यूरेट कैलकुलेशन किया। एक व्यक्ति के जीवन में इतना विकास एक साथ नहीं हो सकता, जो स्क्वायर रूट का भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और जीरो भी उसी ने इन्वेंट किया, उससे पहले हमको कुछ नहीं आता था। तो ये मूर्खता क्यों पढ़ाई जा रही है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आर्यभट्ट से पहले से ही हमारा जो गणित है वो आर्यभट्ट तो उस परंपरा में एक प्रथम व्यक्ति थे। एक उन्होंने एक रेडिकल कॉन्सेप्ट दिया था कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूम रही है। ये पहले ये इस बात को हमारे उसने सारा 360 डिग्री जो स्फेरिकल सबको भूगोल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस थे, लेकिन पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूम रही है, ये आर्यभट्ट के अपनी वो था। और उन्होंने ये कहा कि जितने भी इक्लिप्सेस होते हैं वो पृथ्वी की छाया या चंद्र की छाया की वजह से, इसलिए नहीं है कि कोई राहु केतु वाला जो कॉन्सेप्ट था पहले, वो नहीं है। राहु केतु भी वो एक तरह का असेंडिंग नोड डिसेंडिंग नोड था, लेकिन उसके साथ थोड़ी माइथोलॉजी वो आ जाता है, कुछ कहानियां जुड़ जाती है बाद में। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से ये समझा है कि पृथ्वी घूम रही है, उस वजह से जो छाया पड़ती है उसकी वजह से ही ये ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। ये आर्यभट्ट सर्वप्रथम उन्होंने कहा, ये उनकी विशेषता है। जीरो तो उससे पहले से ही था, वैदिक युग से ही भारत के पास ये कॉन्सेप्ट था। तो ये आपको समझना, लगभग पश्चिम